Good afternoon, ma'am. Good afternoon, beta. How are you, ma'am? Fine, beta. हमने बेटा लास्ट टाइम वी हैड डन प्लांट सेल्स हमने किए थे, एक हमने किया था टर्जिड सेल, अनदर इज मैम एक क्वेश्चन है. हाँ जी बेटा. मैम why blood stored in isotonic saline water? Why blood is stored in isotonic saline water. अभी बताती हूँ. And plasmodiazed cell. अच्छा देखो बेटा, पहले तो अपना माइक थोड़ा सा दूर करो बेटा, यहाँ पे फिर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है. माइक थोड़ा सा दूर करो. चलो बैठो. अब क्या है बेटा, ब्लड में ब्लड सेल्स है, ठीक है. अगर हम ब्लड को, इफ द ब्लड इज poured in hypotonic solution, then what will happen? The blood has the blood cells. Hypotonic solution means cells में salt ज्यादा है. Therefore, water it goes in from solution. एनिमल सेल्स है. इधर ध्यान से सुनो, छोड़ दो उसको, कॉपी छोड़ दो, पहले ध्यान से सुनो. एनिमल सेल्स है, सेल वॉल नहीं है. Therefore, due to endosmosis, blood cells, mainly RBCs, blood cells will burst. ठीक है. दूसरी तरफ बेटा, अगर ब्लड if it is mixed in hypertonic solution, then what will happen? ब्लड सेल से Exosmosis will occur. Water will diffuse out. ठीक है. So blood cells shrink and die. ठीक है. हम क्या चाहते हैं, ना ब्लड सेल्स स्वेल हो, ना ब्लड सेल्स श्रिंक हो. ठीक है. अगर ऑस्मोसिस हो भी रही है, द अमाउंट ऑफ वाटर गोइंग इन शुड इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर कमिंग आउट, एंड दैट विल हैपन ओनली इन isotonic solution. That's why blood is placed in isotonic saline solution, है ना. And I think it is 0.9 molar. मैं अभी केमिस्ट्री वाली मैम से पूछ के बताती हूँ. So it is NaCl, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन. सोनिया मैम, मुझे बताओ ब्लड सेल्स कितने मोलर सेलाइन सॉल्यूशन में रखते हैं? 0.9 मोलर, 0.9%, 0.9% NaCl, है ना. So blood is stored in 0.9% NaCl solution. और आप एक क्वेश्चन एक और आ सकता है इससे रिलेटेड कि आरबीसीज, मेनली हम बात कर रहे हैं आरबीसीज की. आरबीसीज आर आइसोटोनिक टू, दीज आर आइसोटोनिक टू इतने % सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन.
ये खबर ब्लड को इसमें क्यों कब जब हम ब्लड अगर आपने कभी देखा हो कि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो जो वो पैक्स होते हैं वो खाली थोड़ी होते हैं, उसमें सोल्यूशन होता है। ठीक है, व्हाट इज दैट सोल्यूशन? नहीं तो ब्लड कोएगुलेट हो जाएगा, उसमें एंटी कोएगुलेंट भी होता है और कुछ सोल्यूशन होता है। वो क्या है? 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। आरबीसीज आइसोटोनिक होते हैं इसके। मेनली। ठीक है जी, इज इट क्लियर? ठीक है, आगे करें। ये रब कर दूं मैं सारा, ये एक्सप्लेन कर सकते हो अगर क्वेश्चन आए तो कर लो। ये तो कर ही लिया होगा। एंडोस्मोसिस, हाइपोटोनिक तो एंडोस्मोसिस, सेल्स विल बर्स्ट। हाइपोटोनिक तो एक्सोस्मोसिस, सेल्स विल श्रिंक। आइसोटोनिक, नो चेंज इन सेल वॉल्यूम। अब मैंने बताया तीन टाइप के, तीन कंडीशंस होती है प्लांट सेल्स की, टर्जिड, फ्लैसिड एंड प्लाज्मोलाइज्ड। यहाँ पे टर्गर प्रेशर हम x बार्स ले सकते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे टर्गर प्रेशर है। ठीक है, ड्यू टू एंडोस्मोसिस, ड्यू टू मोर वाटर कंटेंट, cells are turgid. They are exerting pressure on the cell wall. That's why they are called as turgid cells. Flaccid cells में turgor pressure 0 bars. ठीक है? Because flaccid cells वाटर मूवमेंट are placed in आइसोटोनिक isotonic solution. Normal cells है। एंड प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स में अगर हम कहें तो टर्गर प्रेशर लेस देन 0 भी हो सकता है, माइनस में हम कहें यहाँ पे हाइपोटोनिक। यस, इट इज फॉर्म्ड when cells are placed in hypertonic solution. एंड प्लाज्मोलिसिस की मैंने डेफिनेशन आपको लिखवाई थी, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम द सेल वॉल। हाँ जी बेटा, जाओ। श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम द सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर वाला सारा प्रोटोप्लास्ट ही है। ठीक है, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू एक्सोस्मोसिस। बेटा इधर, बाकी के इधर देखो, ड्यू टू एक्सोस्मोसिस, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस। और यहाँ पे प्लाज्मो, देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखो, प्लाज्मोलाइसिस। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय लाइसिस? मीना, हाँ जी मीना बोलो, लाइसिस मीन्स इन। अच्छा, सोनिया, हाँ जी बेटा, लाइसिस का क्या मतलब है? मोनिका बैठो, आप बैठो, सोनिया बैठो। हाँ जी प्रांचल, व्हाट डू यू मीन बाय लाइसिस? इट इज ब्रेक डाउन, है ना? लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। प्लाज्मो मीन्स प्रोटोप्लास्ट, है ना? इट इज प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट का ब्रेकडाउन, प्रोटोप्लास्ट का ब्रेकडाउन क्यों है? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इससे अलग हो गई है। यहाँ पे सारा क्या आ गया है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन। और इस हाइपरटोनिक सोल्यूशन ने क्या किया है? प्रोटोप्लास्ट को ब्रेक डाउन कर दिया है, डीजेनरेट कर दिया है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइसिस। नेक्स्ट आ जाइए, इंपॉर्टेंस ऑफ
It is breakdown of protoplast when the hypertonic solution enters in between cell wall and plasma membrane. ठीक है. Then next आ जाइए importance of plasmolysis. क्या इंपॉर्टेंस है? सेल वॉल बेचारा प्लांट सेल तो मर रहा है, फिर क्या इंपॉर्टेंस है? हमारे लिए ही हो सकती है बेटा, प्लांट्स के लिए नहीं हो सकती. ठीक है ना. इट कैन बी फॉर अस ओनली. प्लांट्स के तो सेल्स बेचारे मर रहे हैं, उनके लिए क्या यूज है? सो फर्स्ट आ जाइए बेटा, दैट इज गोल्फ ग्राउंड्स. Golf grounds are regularly salted to kill weeds. ठीक है. उन weeds की क्या हो जाएगी? प्लाज्मोलिसिस हो जाएगी. उसके बाद है वीड्स जो एक्स्ट्रा घास फूस से उगाते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं पिकल्स, चटनीज हैव लॉट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर. एक तो टेस्ट के लिए तो है ही है. ठीक है. विच किल, दूसरा ये एंटीसेप्टिक भी बिहेव करता है. विच किल्स माइक्रोब्स बाय प्लाज्मोलाइसिस. विच किल माइक्रोब्स बाय प्लाज्मोलिसिस. ठीक है जी. और बताइए, मेनली तो हम बात करते हैं माइक्रोब्स ही हम जो है वो किल करते हैं. और प्लाज्मोलिसिस की और आप बताइए. ओनली लिविंग सेल्स शो प्लाज्मोलिसिस. ओनली लिविंग सेल्स शो प्लाज्मोलिसिस. ठीक है. तो अगर अब हमें सेल्स नहीं पता चल रहा कि ये लिविंग है कि डेड है, हमने क्या किया? सेल्स को हमने थोड़ा सा माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और उसके ऊपर हमने सॉल्टी सॉल्यूशन डाल दिया. ठीक है. अगर हमने देखा कि सेल श्रिंक होने शुरू हो गए हैं, प्लाज्मोलिसिस थोड़ी सी शुरू हुई है, इमीडिएटली हमने उन सेल्स को लेके वॉश कर दिया पानी से, तो हमें पता चल गया कि ये लिविंग सेल्स. दस this process helps us to know whether the cells are living or dead. ठीक है जी. सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मोलिसिस. देन नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, साथ साथ मैं वो करवाती चलती हूँ. व्हाट वुड बी वाटर प्रेशर पोटेंशियल या टर्गर प्रेशर ऑफ ए फ्लैसेड सेल? बोलो जल्दी से. मैंने अभी बताया 0. इट इज 0. फ्लैसेड सेल का टर्गर प्रेशर 0 है. विच ऑर्गेनिजम्स अदर देन प्लांट्स पोजेस सेल वॉल? सृष्टि बताएगी. हाँ जी सृष्टि, दोबारा से मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ.
Which organisms other than plants possess cell walls? जिसमें प्लाज्मोलिसिस हो सकती है. एक तो प्लांट सेल्स हुए, दूसरे क्या हुए सृष्टि? हाँ जी अंकुश आप बताओ. हाँ पप्री सृष्टि. बैक्टीरिया. दूसरा fungi also. Bacteria, fungi and plants, because they have cell wall, therefore they can be plasmolized. Is it okay? ठीक है जी. So next process आ जाती है बेटा. तो यहाँ पे एक स्टार डाल के पॉइंट लिख लेना है कि अभी तक हमने बात की थी ऑस्मोसिस की. ऑस्मोसिस इज ए type of diffusion. ठीक है. तो till now we were discussing about osmosis, right? So we had done endosmosis, exosmosis with respect to cells. Next process आ जाती है बेटा imbibition. जो इम्बाइबिशन है बेटा, इसमें क्या है? सॉल्वेंट इज एब्सॉर्ब्ड बाय कोलॉइडल सब्सटेंसेस. ठीक है. कोलॉइडल सब्सटेंसेस such as carbohydrates, proteins, etc. So solvent is absorbed by colloidal substances such as carbohydrates, proteins, etc. ठीक है. जो दूसरी बात हम और क्या कह सकते हैं? दैट इज एडजॉर्प्शन. इट इज मेनली एडजॉर्प्शन. एडजॉर्प्शन आपने पढ़ा है, सरफेस प्रोसेस होती है. सरफेस पे जब लिक्विड एब्जॉर्ब कर रहा हो. ठीक है. सो एडजॉर्प्शन ऑफ सॉल्वेंट इसी की और डेफिनेशन बाय द surface of solids, by the surface of the solids is called as adsorption or is called as imbibition. जो बेटा the colloidal substance which absorbs, जो absorb करता है, it is called as imbibant. उसको हम कहते हैं imbibant. The solvent which is absorbed is called as imbibate. The solvent which is absorbed is called as imbibate. ठीक है. इसके बाद है कंडीशंस. क्या कंडीशंस है इम्बाइबिशन के लिए? तो इम्बाइबिशन पहली बात तो जब कोलॉइडल सब्सटेंसेस है और वो वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो उसको इम्बाइबिशन कह देते हैं. ठीक. कंडीशंस, किन कंडीशंस में इम्बाइबिशन होती है?
conditions for imbibition. First है बेटा, there should be some water potential gradient between colloidal substance and the solution. इसका मतलब सॉल्यूशन में वाटर ज्यादा होना चाहिए, कोलॉइडल सब्सटेंस में कम होना चाहिए. ओनली देन द वाटर मूव्स फ्रॉम सॉल्यूशन टू द कोलॉइडल सब्सटेंस. एक ग्रेडियंट होना चाहिए. सेकंड है द कोलॉइडल सब्सटेंस and imbibant should be compatible. दोनों में इंटरेक्शन होना चाहिए. ये ना हो कि यहाँ पे अल्कोहल है और वहां पे प्रोटीन्स है. प्रोटीन्स कैन नॉट एब्जॉर्ब अल्कोहल. दोनों में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होनी चाहिए, एफिनिटी होनी चाहिए. ठीक है. इसका मतलब अगर पानी एब्जॉर्ब होना है, द कोलॉइडल सब्सटेंस शुड बी हाइड्रोफिलिक. फॉर एग्जाम्पल आप कर लो, कोलॉइडल सब्सटेंस शुड बी hydrophilic if water is the imbibate. If water is the imbibate, then the colloidal substance should be hydrophilic. Is it right? ये चीज समझ में आई बेटा? तो अब हम यहां देख रहे हैं, एक तो दोनों में इंटरेक्शन होनी चाहिए, दूसरा वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होना चाहिए. तो हम क्या कहेंगे? Therefore, या thus imbibition is also a type of, हाँ जी बोलो. Diffusion. Yes. Diffusion means from high concentration towards low concentration. Osmosis is a type of diffusion. Imbibition is a type of diffusion. Is it okay? Yes. Then some examples of imbibition. Root hair absorb water from soil by imbibition. Root hair absorb water from the soil by दूसरा आ जाता बेटा, हमने रॉक्स ली, 2 रॉक्स है या एक ये बड़ी सी रॉक है जिसके अंदर क्रेविसेस है. ठीक है. हमने क्या किया बेटा, अब हमने इस रॉक को तोड़ना है. ठीक है. तो पहले टाइम में डायनामाइट नहीं हुआ करते थे, तो क्या करते थे, वुडन लॉग्स
बहुत बड़े बड़े वुडन लॉग्स, उसके तने जो है, वुडन लॉग्स आर प्लेस्ड इन द crevices of rocks. ठीक है, then wooden logs are watered, बहुत सारा इनको पानी देते थे, imbibition, imbibition बहुत ज्यादा हो जाता था, then large imbibition pressure. वुडन लॉग्स कितना स्वेल करेंगे, जितनी जगह है उतना ही तो स्वेल करेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा imbibition pressure, so they burst with pressure. हाँ, thus breaking rocks. और यही चीज द सेम प्रोसेस, मतलब ब्रेकिंग तो नहीं, बट यू कैन सी दैट स्वेलिंग ऑफ डोर्स एंड विंडोज. अच्छा, बारिश के हाँ, ड्यूरिंग रेनी सीजन. आपके दरवाजे खिड़कियां सब अड़ जाते हैं रेनी सीजन में, ठीक है, तो हम, आपकी मम्मा पापा कहते कोई बात नहीं, अब सर्दी आएगी या गर्मी आएगी तो खुद ठीक हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज ड्यूरिंग रेनी सीजन द वुडन डोर्स एंड विंडोज दे इम्बाइब वाटर, ठीक है, ड्यू टू इम्बाइबिशन. Their volume increases. इसलिए जब भी हम कुछ फर्नीचर बनवाते हैं या कुछ, तो हम कहते हैं सूखी लकड़ी होनी चाहिए, ठीक है, स्वोलन वुड होगी तो गर्मियों में वो छोटी छोटी सी हो जाएगी, ठीक है, वो प्रॉपर फिट ही नहीं आएंगे, उसके कब्जे अलग, वुड अलग, ठीक है ना. सो दिस प्रोसेस, तो हम कहते हैं सूखी लकड़ी हो तब हम फर्नीचर बनाएं. Dry seeds have very low, मतलब सिर्फ 5% of water. When put in water, seed coat imbibes water. Seed coat imbibes water and bursts, and it causes germination of seeds. So you can say that during germination of seeds, the seeds absorb water by the process of imbibition. Is it okay? Seed coat imbibes water and bursts. Ultimately resulting in germination of seeds. अंकुश, क्या बात होगी बेटा, लिख नहीं रहा? आयुष, सॉरी. Are you okay?
नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, हमारे पास बहुत तरह के प्लांट्स हैं, दैट इज एल्गी, ब्रायोफाइट, रिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। हियर वी मेनली टॉक अबाउट, हाँ जी बेटा, बॉइल्ड एग। मैंने कहा था तुम मुझे केमिस्ट्री की क्लास में बता देते, क्योंकि एक दिन बाद तो मैं भी भूल जाती हूँ ना। जैसे ही केमिस्ट्री की क्लास शुरू हो उसी टाइम मुझे बताओ, 1.5 घंटे में तो बहुत कुछ हो जाता है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ठीक है जी। सो हम बात यहां पे करेंगे इन हायर प्लांट्स। We will mainly talk about higher plants. Which are higher plants? Gymnosperms and angiosperms. दो ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस काम करती है। वन इज transport of water and minerals from roots to all other plants, To all other parts. parts of plant. और दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। मेनली अगर हम बात करें फ्रॉम लीव्स टू वेरियस पार्ट्स एंड स्टोरेज ऑर्गन्स। ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस अगर हमने की है, वो अभी तक हमने की है सेल टू सेल डिफ्यूजन, या फिर हमने की है सेल टू सेल एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर हम कहें एक रूट सेल से दूसरे रूट सेल, तीसरे 10वें रूट सेल, फिर 1 स्टेम सेल, फिर दूसरा, फिर 100 स्टेम सेल, फिर 1000 स्टेम सेल, अगर ऐसे जाएगा, it will take years, many years to reach some water from roots up to the tip of the plant. ठीक है, so cell to cell transport is very slow. सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत स्लो होगा। फॉर एग्जाम्पल, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर takes 2.5 seconds to cover distance of 50 micrometer. और प्लांट्स है हमारे पास 40 फीट टॉल, 100 फीट टॉल। ठीक है,
by this process years will be taken to transport water from roots to tip of plant. कई साल लग जाएंगे, उस टाइम तक तो प्लांट मर जाएगा। ठीक है, इसलिए thus for efficient transport plant has, क्या है प्लांट्स के पास? Vascular tissue. Yes, plant has specialized vascular tissues such as xylem and phloem. ठीक है, साथ ही लिख लो ऑल्दो इन लोअर प्लांट्स, ऑल्दो इन लोअर प्लांट्स सच एज एल्गी, mosses etc, algae, mosses etc ट्रांसपोर्ट, बेटा सीधे होके बैठो बेटा, सीधे कमर सीधी। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस mainly occurs by diffusion, क्योंकि as they are non-vascularized as they are non-vascularized and are smaller in size and are smaller in size। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू वेस्कुलर टिश्यूज, थ्रू vascular tissues in higher plants is called as translocation। ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन क्या है? ट्रांसलोकेशन वाटर, मिनरल्स एंड फूड का ट्रांसपोर्ट थ्रू वेस्कुलर टिश्यूज, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। ठीक है जी, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में ही सेकेंड पॉइंट आ जाता है बेटा, बल्क फ्लो या मास फ्लो। bulk transport और mass flow of substances। बेटे देखो यहां पे xylem, this is xylem,
इसमें किसी भी प्रोसेस से, बाकी हम सारा एक्सप्लेन करेंगे ट्रांसपीरेशन पुल, बट जब यहाँ वाटर जा रहा है तो अकेला वाटर नहीं जा रहा है, इसके साथ बहुत सारे मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, जब लीव्स में से, यहाँ सब ये फ्लोइम आ जाइए, जब लीव्स में से फूड आ रहा है तो सिर्फ सुक्रोस नहीं है, देयर आर अदर नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स ऑल्सो, सुक्रोस ऑल्सो, बाकी के कंपाउंड्स जो है वो भी मूव कर रहे हैं। ठीक है, जबकि जो डिफ्यूजन होती है, डिफ्यूजन में हमेशा यहां पे लेटस से वाटर ज्यादा है, यहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है, यहां पे CO2 ज्यादा है, तो हमेशा अपनी अपनी कंसंट्रेशन है। वाटर इधर से इधर ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन इधर से करेगी, CO2 इधर से करेगा। तो जो डिफ्यूजन है वो हर सब्सटेंस की इंडिविजुअल डिफ्यूजन है, जबकि जो बल्क ट्रांसपोर्ट है वो बहुत सारे सब्सटेंसेस इकट्ठे मूव करते हैं। ठीक है, और प्लांट्स में थ्रू वेस्कुलर टिश्यूज क्या हो रहा है, दैट इज बल्क ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो राइट डाउन वाटर, मिनरल्स एंड फूड। वाटर, मिनरल्स and food moves through vascular tissue, moves through vascular tissues as mass flow, or bulk flow, as mass flow or bulk flow, in which, सीधे होके बैठो बेटा, सीधे होके, in which, सो जाओगे नहीं तो बेटा, in which various substances, in which various substances in bulk move from one place to another place. One place to another place due to the pressure differences, between 2 points, due to the pressure differences between 2 points. Second point लिखिए, the main characteristic of mass flow is that, the main characteristic of mass flow is that various substances in the form of solution or suspension, is that various substances in the form of solution or suspension moves at the same pace, या same velocity. सस्पेंशन यानी सस्पेंशन जिसमें कोलॉइडल सब्सटेंसेस हो, है ना, जैसे मिल्क इज ए सस्पेंशन। ठीक है, क्लियर नहीं होती, सॉल्यूशंस क्लियर होती है। मूव एट द सेम वेलोसिटी। जैसे बेटा रिवर है, जिसमें रिवर में कुछ सब्सटेंसेस अगर उसमें मिक्स्ड है और तैर रहे हैं, तो जिस वेलोसिटी से रिवर जा रही है वो सब्सटेंसेस भी तो उसी वेलोसिटी से जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज है कि रिवर का प्रेशर ग्रेडियंट है कि रिवर ने ऊपर से नीचे आना है। ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना है, बट सब्सटेंसेस की कोई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है, उन्होंने तो रिवर के साथ मूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, द डिफरेंस बिटवीन
diffusion and mass flow is that the difference between diffusion and mass flow is that in diffusion different substances diffuse. Different substances diffuse independently depending on their concentration gradient. Diffuse independently depending on their concentration gradient. मतलब ऑक्सीजन और CO2 लेटर से एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, बट अगर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन सेम हो गई तो उसकी डिफ्यूजन बंद हो जाएगी, CO2 डिफ्यूज करती रहेगी, ठीक है। जबकि मास फ्लो में इंडिविजुअल नहीं, वो ग्रुप में मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। That is why mass flow is due to positive hydrostatic pressure or negative hydrostatic pressure. मैं अभी आपको बताती हूँ ये क्या है। पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, फॉर एग्जाम्पल जाइलम ट्रांसपोर्ट ड्यू टू रूट प्रेशर, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या suction pressure, for example xylem transport due to transpiration pull। आप थोड़ा सा इमेजिन ये करो कि जब आप छोटे थे और आपको दो गिलास रख दिए, दो ग्लासेस रख दिए सुंदर से, एक में दूध डाल दिया विदाउट बॉर्नविटा और दूसरे में कोल्ड ड्रिंक डाल दी, तो क्या करोगे? दूध वाला जो है वो मम्मी तुम्हारे पुश करेगी तुम्हारे मुंह में, है ना। फीका हो, चीनी डली ना हो, बॉर्नविटा ना हो, तो आपकी मम्मा उड़ेलेगी कि पियो पियो, है ना। और जिसमें जूस डला है वो स्ट्रॉ से आप सक कर जाओगे जैसे भूखे ही बैठे हो उसके लिए, राइट, ठीक है। चलो ये तो एक थोड़ी सी डेली आपकी एग्जांपल होगी। अदरवाइज पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कि आपके घर में मोटर लगी होगी, लगी हुई है पानी की मोटर, सबके घरों में आजकल है, उससे आप नीचे से ऊपर भेजते हो पानी के, नहीं करते हो ना, ऊपर टैंकीज में चढ़ाते हो, टैंक्स में, तो दैट इज पॉजिटिव, मींस प्रेशर से ऊपर भेजते हो। नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऊपर से पानी आपकी टैंकी ओवरफ्लो हो जाए तो खुद ब खुद पानी नीचे आ जाता है, दैट इज नेगेटिव। यहां रूट प्रेशर क्या है कि ट्रांसपिरेशन तो हो नहीं रही, पानी लूज हो नहीं रहा, बट नीचे से एब्जॉर्प्शन हुए जा रही है रूट्स में। इधर ध्यान दो, रूट्स में प्रेशर पानी एब्जॉर्प्शन हुए जा रहा है, जिससे रूट्स में पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, एंड दैट इज क्रिएटिंग प्रेशर। अब वो प्रेशर, वो इतना प्रेशर है कि अब पानी कहीं जाना चाहता है, वो वापस रूट में नहीं जा, सॉइल में नहीं जा सकता। अब वो कहाँ जाता है? ड्यू टू दैट प्रेशर वाटर इज पुश्ड अपवर्ड्स, ठीक है। सो दैट इज पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ऊपर वाला मांग नहीं रहा है, उसने धक्के से ऊपर भेज दिया, हाँ, उसको भी नहीं चाहिए ऊपर वाले को, बट रूट कहते हैं मेरे पास इतना है, मैं क्या करूं, तू ले तू ले। नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यहाँ पे क्या है? ट्रांसपिरेशन से पानी ऊपर से लूज हुए जा रहा है,
The leaves are always deficient of water. They absorb the water. They suck water from the stem. Stem sucks water from the roots, and root sucks water from the soil. ठीक है? So this is negative hydrostatic pressure या suction pressure. ठीक है? Mass flow है तो क्या, वाटर को अपसाइड करना है या वाटर को ऊपर खींचना है, बट वाटर के साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बल्क ट्रांसपोर्ट. इज इट ओके? ठीक है, लिख लिया ये? हाँ जी. ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट आ जाइए बेटा. अब हम एक पॉइंट करते हैं कि गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट्स. हमें कैसे पता चला कि जाइलम जो है वो पानी ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोइंग जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट करती है. व्हेन वी विल स्टडी प्लांट एनाटॉमी तो हम आपको ये बताएंगे दैट जाइलम यहां पे प्रेजेंट है. दिस इज सेंटर में क्या है, जाइलम, और उसके बाहर क्या है, फ्लोएम. इफ बार्क इज रिमूव्ड, हमने क्या किया, एक ट्री लिया, स्टेम ली और उसकी एक रिंग में, पूरी बार्क नहीं, आर स्ट्रिप ऑफ बार्क इज रिमूव्ड, एक रिंग जो है हमने उसकी रिमूव कर दी. इफ बार्क स्ट्रिप is removed in circle from stem, हमने वो रिमूव कर दी. ठीक है, तो क्या होगा, कौन सा प्लांट मरेगा, कौन सा पार्ट मरेगा? विल शूट डाइज फर्स्ट कि रूट डाइज फर्स्ट? मरेगी ना, रिकॉर्डिंग आती, बीच से काटती है, बीच से निकालती है. ठीक है, आप बताइए कौन सा पार्ट डाई करेगा? शूट यानी ऐसे निकाली है. हमने एक स्टेम ली है ना, उसकी लटस से ये वाली बार्क जो है, एक रिंग में बार्क हमने रिमूव कर दी. तो क्या रिमूव हुआ पहले मुझे बताओ? फ्लोएम इज रिमूव्ड, क्योंकि बार्क में सिर्फ फ्लोएम है बेटा. अच्छा अच्छा, हाँ जी. फ्लोएम इज रिमूव्ड एंड इन दिस केस उस रीजन में फ्लोएम, ऊपर फ्लोएम है, नीचे फ्लोएम है, बस इस रीजन में फ्लोएम नहीं है. ठीक है, जब इस रीजन में फ्लोएम नहीं है, फूड इज नॉट ट्रांसलोकेटेड to roots. Am I right? Therefore, roots die first. ठीक है, हमें ये पता है कि बार्क जब हम रिमूव करते हैं तो फ्लोएम रिमूव होता है. तो हमने देखा कि रूट्स पहले मर गई. और क्यों मरी? क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिल रहा. इसका मतलब फ्लोएम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड. दूसरा एक्सपेरिमेंट आ जाता है बेटा, हॉलो हार्टेड. हॉलो हार्टेड स्टेम. हमने बेटा एक स्टेम ले ली, एक बोरर ले लिया, यहां से हमने होल किया और यहाँ का सारा टिश्यू जो है ये वाला हमने बाहर निकाल दिया. ये जाइलम रहेगी, ये जाइलम रहेगी, बट यहाँ पे जाइलम नहीं है, ये हमने बाहर निकाल दिया. ठीक है, सो इन दिस
xylem, यहाँ पे part of xylem is removed, and in this case shoot dies due to wilting. What is wilting? That is deficiency of water. सड़ना नहीं बेटा, मुरझा जाना. विल्टिंग होता है मुरझाना, है ना. शूट मुरझा गई क्योंकि पानी ही नहीं मिला. दिस शोज दैट water is transported through xylem. मैम गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में कैसे कट किया उसको, मतलब सर्कुलर शेप में? बेटा ये स्टेम है, यहाँ से हमने बार्क रिमूव कर दी. अच्छा. एक पार्ट में. अच्छा. ऊपर तो फ्लोइंग रह गया, नीचे भी फ्लोइंग रह गया, बट ये जब कॉन्टिन्यूटी नहीं रही, यहाँ से खाना नीचे ही नहीं जाएगा. ठीक है ना. So, xylem, as I had told you, it transports water and minerals, whereas phloem, it transports sugars and nitrogen compounds such as amino acids, or भी, but such as nitrogen compounds, they are also transported through phloem. ठीक है जी. सो इसके बाद सबसे पहले अब आ जाता है बेटा ट्रांसलोकेशन. तो बाद की बातें हैं. फर्स्ट आ जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. अब ये देखिए बेटा, ये है रूट. ठीक है. रूट में हम एनाटॉमी में करेंगे, बट फिर भी थोड़ा सा जनरल आपको बता दूं. ये है बेटा एपिडर्मिस. दिस इज होल एपिडर्मिस. उसके बाद आ जाते हैं बेटा ये सेल्स है, इसको हम कहते हैं, 9th में थोड़ा सा आपने किया होगा, कॉर्टेक्स. ऐसे सेल्स है और सेल्स के बीच में, डिफरेंट सेल्स के बीच में स्पेसेस भी है. ठीक. उसके बाद then there is present endodermis. यहां पे एंडोडर्मिस है. एंडोडर्मिस के बेटा बीचों बीच थिकनिंग्स है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है. ये सारी एंडोडर्मिस है. ठीक है. ये बीचों बीच थिकनिंग है, थिक्स है, थिक स्ट्रिप है. दैट इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस. ठीक है. लेट अस से दिस इज एंडोडर्मिस.
एंडोडर्मिस के अंदर फिर एक लेयर है सेल्स की, एक तो नहीं काफी लेयर्स होती है, बट हमारे पास दिस इज पेरिसाइकल। ठीक है जी। फिर यहां पे बेटा वेस्कुलर टिश्यूज है, जाइलम एंड फ्लोएम। सेंटर में है जाइलम एंड फ्लोएम। इज इट ओके? कुछ एपिडर्मल सेल्स इलोंगेट होते हैं टू फॉर्म द रूट हेयर। सम एपिडर्मल सेल्स elongates to form the root hair. ठीक है जी। अब बेटा ये रूट हेयर है, ये हम थोड़ा सा छोटा बना लूं, एक मिनट। दिस इज एपिडर्मल सेल। हम एक लेयर सीधी दिखा रहे हैं। एपिडर्मल सेल के बाद क्या आ जाता है बेटा? देन देयर इज प्रेजेंट कॉर्टिकल सेल, देन देयर इज एंडोडर्मल सेल, पेरिसाइकल, और फिर यहाँ पे जाइलम फ्लोएम बाहर नहीं है, वो स्टेम की बात थी। ये रूट्स है। यहाँ पे आ गया जाइलम। ठीक है। दिस इज सेल वॉल। ये सारी सेल वॉल है बाहर वाली। हर सेल में सेल वॉल तो है ही है। ठीक है जी। दिस इज ये कंप्लीट जो है, ये सब सेल वॉल है। यहां पे लिख लो एपिडर्मल सेल, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल सेल। ठीक है। जो एंडोडर्मिस है बेटा, वहां पे आई हैड टोल्ड यू सेल वॉल ही तो थिक होती है ना बेटा उसकी। तो दिस इज एंडोडर्मिस, दिस इज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स।
दिस इज कैस्पेरियन स्ट्रिप. वाटर जो है बेटा यहां से एब्सॉर्ब हो रहा है in the cell wall. It is mainly moving through the cell wall. वाटर जो है मेनली मूव कैसे कर रहा है? दैट इज सेल वॉल के थ्रू. यहां पे हमारे पास प्लाज्मोडेस्माटा भी है. अगर आप याद करो जब हमने सेल स्ट्रक्चर किया था तब आपको प्लाज्मोडेस्माटा बताया था मैंने. जहां पे एडजेसेंट सेल्स कंटिन्यू होते हैं दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा. बट यहां से देखो एपिडर्मल सेल से वाटर सेल वॉल के थ्रू मूव कर रहा है. दिख रहा है बेटा आपको? बेटा कोई हंसने वाली बात है? सोनिया पीछे चल बेटा, सीट शिफ्ट करो जल्दी से. और ये अपनी ना समझ आया तो ये तो दोबारा समझ आना नहीं. ये चैप्टर भी थोड़ा सा समझने वाला है. यहां से बेटा नाउ इट कैन नॉट मूव फर्दर because there is present Casparian strips, thick strips. Suberized हम इसको कहते हैं. Suberized strip. सुब्रिन एक तरह की वैक्स है, ठीक है? हाँ, वाटर रेजिस्टेंट है, which does not allow further movement of water. अब पानी क्या करे? तो पानी अब, हाँ जी, सुब्राइज्ड, SUBRISED, सुब्राइज्ड स्ट्रिप. अब बेटे पानी सेल वॉल के थ्रू नहीं जा सकता, देयरफॉर इट क्रॉसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंटर्स इनसाइड द एंडोडर्मल सेल्स. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एंडोडर्मल सेल से अंदर चला गया. उसके बाद फर्दर ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू पेरिसाइकल में गया और बाय डिफ्यूजन पेरिसाइकल से जाइलम में चला गया. यहां पे आपको याद रखना है बेटा, सेल वॉल इज डेड, जबकि जो प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट अगेन मैं बता रही हूं सेल वॉल के जो कुछ भी अंदर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म, दैट इज प्रोटोप्लास्ट. प्रोटोप्लास्ट इज लिविंग. Cell wall is dead, protoplast is living. Is it okay? Yes, ma'am. ठीक है जी. तो अब यहां पे
यहाँ लिखो द डेड कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल, द कॉन्टिन्यूटी, मैम एक मिनट। the continuity through the continuity of substances through the dead components of the cell, through the dead component of the cell is called as apoplast. The continuity या the transport of substances through dead components of the cell या dead component of the plants is called as apoplast. Whereas living continuum, whereas living continuum of the plants is called as symplast. यहां पे अगर आप देखेंगे बेटा, आगे मैं लिखवाती हूँ, बट अब यहाँ पे देखो, इधर ध्यान दो, 1 मिनट पेन छोड़ के इधर ध्यान दो। जो पानी यहां से सेल वॉल के थ्रू जा रहा है, दिस इज सिम्प्लास्ट, जल्दी जल्दी से मूव कर रहा है। बट इन एंडोडर्मिस, सिम्प्लास्ट नहीं, एपोप्लास्ट, आई एम सॉरी, इट इज एपोप्लास्ट, बट एपोप्लास्ट ब्रेक्स in the endodermal cells due to presence of Casparian strips. यहाँ पे सेल वॉल के थ्रू नहीं जा सकता, therefore water has to enter in the symplast. ठीक है, and further movement occurs by symplast. ठीक है, तो इसके बाद है तो मूवमेंट तो डिफ्यूजन के थ्रू ही है, बट अगर डिफ्यूजन डेड कंपोनेंट्स में हो रही हो then it is apoplast. अगर living continuum में diffusion है तो it is symplast. Is it okay? और उसके बाद फिर ध्यान से एक बार, उसके बाद आ गया जाइलम में। जाइलम में आपने 9th में पढ़ा होगा, जाइलम में वेसल्स है, ट्रकीड्स है, ऑल दीज आर डेड कंपोनेंट्स। जाइलम में ये सभी डेड है, तो जो जाइलम में ट्रांसपोर्ट हो रहा है that is by apoplast only because the xylem is dead. Is it okay or not? Yes, ma'am. ठीक है, लिख ले, बना लिया ये आपने? मैम एक मिनट, ये 2 पहले लिख लो फिर ये कर लेना। ठीक है, राइट डाउन। In plants the movement of water occurs by both apoplast and symplast. Apoplast and symplast, although symplastic movement is slow. Symplastic movement is slow. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। The water is absorbed. The water is absorbed by root hair. Water is absorbed by root hair, where या from where the water moves through cell wall of epidermal cells and cortical cells. सर का फोन आ रहा है।
मेरी आपकी है, सर की तो नहीं है। जैसे कुछ नहीं है, मेरी है ना, आपकी और मेरी है। सर की कल है। अरे नहीं है, मैं आ रही हूँ। कहना सर आना तो कल भी है। अच्छा बस 1 मिनट की बात है। क्यों? बस 1 मिनट की क्या बताया? सेल वॉल ऑफ एपिडर्मल सेल एंड देन कॉर्टिकल सेल। सेल वॉल ऑफ एपिडर्मल सेल एंड देन कॉर्टिकल सेल। फिर फुल स्टॉप करके द एपोप्लास्टिक मूवमेंट कैन नॉट the apoplastic movement of water cannot continue in the endodermis. Cannot continue in the endodermis due to presence of Casparian strips. Therefore, due to presence of Casparian strips, due to which, therefore, the water moves from cell wall. Therefore, the water moves from cell wall into the protoplast by crossing the plasma membrane. By crossing the plasma membrane through transmembrane pores या through transmembrane spaces. Full stop करके from the protoplast of endodermis transmembrane spaces. From the protoplast of endodermis, the water moves in the pericycle. The water from the protoplast of endodermis, the water moves in pericycle through plasmodesmata. Through plasmodesmata. And finally from pericycle the water moves into xylem. The water moves to the xylem. ठीक है? Therefore, एक लाइन और लिखो बेटा, एक लाइन और. Therefore, water movement in epidermis and cortex. Therefore, water movement in epidermis and cortex is apoplast. therefore Water movement in epidermis and cortex is apoplast. And in endodermis plus pericycle, symplast. Endodermis and pericycle by symplast, which is aided by endodermis and pericycle by symplast, which is aided by cytoplasmic streaming, which is also aided by streaming, streaming. Yes, thank you very much. Okay beta. cytoplasmic streaming. By cytoplasmic streaming.
ठीक है, यहाँ पे लिख लो, most of the water movement is by apoplast because maximum part of the roots have cortical cells that are loosely packed and have lot of intracellular spaces. The movement of water through intracellular spaces and cell wall is apoplast. The movement of water in the intracellular spaces and cell wall is apoplast. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, once inside the xylem, apoplast is apoplast. Next है, once inside the xylem, the water moves mainly through xylem vessels. Xylem vessels are non-living conduits. Conduits होते हैं pipes बड़ी बड़ी. Xylem vessels are non-living conduits. CONDUITS. Non-living conduits. And thus transport through xylem vessels is also apoplast. ठीक है जी. So this is all for today. मैं